Hi everyone, hope all of you are doing good. Today we will start from the main content. This is lecture number 1 and we will straight away start from the main content of the syllabus of JKSSB Finance Accounts Assistant. That is introduction about economics. Respected aspirants, right from the advent of human life on earth, in as soon as Hazrat आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में कदम रखा तो हमारे जन्म के साथ ही हमारी कुछ ज़रूरतें भी थी, नीड्स थे। नीड इज़ ए कंपैरेटिव टर्म। उस ज़माने के हिसाब से नीड सिर्फ इतनी थी कि हमें खाने के लिए कुछ मिले। जब दौर थोड़ा आगे बढ़ता चला गया, फिर शेल्टर की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर पका हुआ खाने की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर पहनने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी। दैट मीन्स हर एक ज़माने के हिसाब से जो नीड होती हैं ये डिफरेंट होती है। तो राइट फ्रॉम दैट वेरी डे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गई तो the same day economics started. So we can say that economics is as old as human civilization is. क्योंकि उस दिन से ही हमें चॉइस करनी पड़ती थी बिटवीन लेस इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट। सो the for now economics is all about making choices between more important and less important. जब हम कोई काम करते हैं we have to forgo the second one. Suppose हम क्या करते हैं, we are going for the job, हम जॉब के लिए जाते हैं। At this time we cannot do anything else. Or if I am going to college, can I do anything else? I can't at that very time. Suppose I am recording my lecture right now, can I do anything else? No, I can't. That means if I am doing something at the same time I can't do anything else at that time. That means I have to make choice. The every human being, जो भी इंसान दुनिया में है, he utilizes his time according to his preferences. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी लाइफ में he will try to give more time to it. और जो least important है he will try to give less time to it. Got it? That means in every step of our life we have to make choices. Got it? Economics in itself जो मोस्ट ओरिजिन है किसी भी ओरिजिन जो होता है किसी भी चीज़ का, जो भी साइंटिफिक टर्म्स है, सोशल टर्म्स है, दे हैव ग्रीक और फ्रेंच ओरिजिन। ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है it has a Greek origin. It is derived from a Greek word
echoes. Some books write as norms, some books write it as Nieman. Echoes norms or echoes Nieman. These both of these are Greek terms and their meaning is household management. So for now, economics means household management. This term is given by, at that very time, Aristotle terms economics as the science of household management. In other words, I can say that how a house is managed, that is what economics is. The first and foremost important contribution towards the theory of economics, towards the subject of economics, was given by Adam Smith. Also known as father of economics. In 1776, it was 1776, he wrote a book. The name of the book was An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations. This was actually the name of the book. In this book, Adam Smith, according to him, economics is the science of wealth. How we create wealth, how we distribute wealth, how we exchange wealth, how to increase wealth. That is what economics was according to Adam Smith. You should also remember that, we should also remember that at that very point of time, economics was known as political economy because it was termed as inseparable part of politics. It is still inseparable from politics, but nowadays we have a different scenario. Got it? Near about a decade, for 100 odd years, for 100 odd years, the name of the book was treated as definition of economics, the first concrete definition of economics. In I will use only 3 4 definitions here because they are very important. There are many much more, but they are not as important as they are. The second worth mentioning definition was given by Alfred Marshall. Alfred Marshall, according to him, economics is concerned with man's actions in the ordinary business of life. I will share a document with you, so no need to write us anything else. According to him, economics is concerned with man's actions in the ordinary business of life, how he earns his income and how he utilizes it. On the one part, it is study of wealth, and on the other hand, on the other part, and most important part of this definition, it was study of welfare. You should also remember that the first definition which I talked about, that is the definition of Adam Smith, that is called wealth definition of economics.
And the definition given by Alfred Marshall is called welfare definition. Why welfare? Because it was the first attempt to bring in welfare into the act. Economics is not a bread, according to him, it is not a bread and butter science. Welfare is an important part of economics. Welfare, you should understand, welfare क्या होता है? Welfare means well-being of the masses. Got it? The majority of the population जो हमारी country की है, when we will make any policy, suppose there is Ayushman Bharat, it is a health care scheme. There is a midday meal scheme. It is a scheme, it covers masses. It will uplift masses. That means it's a welfare approach. Suppose there is a free education for all. It is a welfare approach. The growth of infrastructure. It is a welfare approach. So Alfred Marshall was the first economist who bring in welfare into the economic affairs. Another more important definition worth mentioning here was given by Robbins, L. Robbins. L. Robbins, it was in early 30s. Yeah, it was 1933 to 35. He wrote a book in which he defined economics in a very different and most acceptable way till now. According to him, economics studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative ends. Got it? There are three, four aspects in this definition. May ends, human behavior, and means. These are three important terms associated with the definition given by Robbins. Human behavior, behavioral approach towards economics was brought into the economic aspect by Robbins. I we have already discussed, हमने already discuss किया है. एंड क्या होता है? एंड होता है व्हाट वी वांट. मीन्स क्या होता है? हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव. व्हाट इज़ आवर एंड राइट नो. हमारा मकसद ये है कि हमें JKSSRB और JKPSC क्वालिफाई करना है. मीन्स क्या है? मीन्स क्या है? हमें डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करनी है, हमें डिफरेंट मटेरियल कंसल्ट करना है. जो ये एंड मीन्स होते हैं विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. अगर हमने बुक इस्तेमाल की, देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल इन द मार्केट. हम कोई भी चैनल या कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं. ये जो दैट मीन्स आर लिमिटेड. और ह्यूमन वांट्स जो बिहेवियर, रैशनलिटी, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज रैशनल. वी वांट मोर देन लेस. अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, वी वांट टू गो बियॉन्ड इट. हमें दूसरी जॉब, उससे अच्छी वाली जॉब. इफ़ वी आर वर्किंग इन ग्रेड 4, वी वांट टू गेट इनटू ग्रेड 5, ग्रेड 6, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट मीन्स ह्यूमन जो वांट्स हैं दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड. जो मीन्स हैं टू अचीव दीज वांट्स दे आर लिमिटेड. और जो ये हमारे मीन्स हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज. सो according to Robbins, economics studies these alternative use. It gives us the best possible alternative to achieve an end. Suppose
There are plenty of books. Suppose I will buy a Arihan book, that means I am making choice between different books. When I am making choice between different books, that means there were alternatives, but मैंने choose किया कि I will go for the Arihan. So this will lead me to this end. And क्या है मेरा वो मकसद है, which I told, which you know also. हमें क्या अभी करना है, JKPSC और JKSSR भी क्वालिफाई करना है. एंड द थर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो रॉबिन्स ने दी है, इट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी डेफिनेशन. We have discussed three definitions. Well definition given by Adam Smith, welfare definition given by Alfred Marshall, and the third scarcity definition given by Robbins. मैंने इनकी dates भी आपको बताई. They are important. You have to remember. We have to remember it. So अगर हम अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं. अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि what economics is actually. So for now, अगर कोई एक और डेफिनेशन है विच इज़ गिवन बाय पॉल ए सैमुअल्सन, इसको हम ग्रो डेफिनेशन कहते हैं. अगर क्वेश्चन आएगा कि who has given the grow definition of economics, go you will follow Paul A. Samuelson. Economics is the study of how man and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among the various people and groups of society. So अगर हम देखेंगे तो our four definitions जो हैं, they have their own flaws and they have their own merits. अब हम अगर एक conclusion पे पहुंच जाते हैं, so we will say that it is a social science. You can have your own definition. For me, this is the right definition for now. Economics is a social science that examines how people choose to use limited or scarce resources in attempting to satisfy their unlimited wants. इसको हम साइंस ऑफ चॉइसेस भी इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि हमें हमेशा चूज़ करना होता है बिटवीन लेस इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा, जो मीन्स हैं दे आर लिमिटेड, जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड. तो मैक्सिमाइज आवर वांट्स में हमेशा मकसद होता है जो हमारी जितनी भी हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज़ गुड. सो हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल होते हैं, वी चूज़ बिटवीन देम और हम इनको अब अपनी वांट्स को, अपने स्कैर्स रिसोर्स को यूज़ करने, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर हम कहेंगे इकोनॉमिक्स स्टडीज़, जो इकोनॉमिक्स जो है, देयर आर फोर पिलर्स जिस पे ये खड़ी है. दे आर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. प्रोडक्शन क्या होगा? इनपुट्स आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज़ ये जो आपने चीज़ें बनाई, इट शुड रीच टू द कंज्यूमर्स. जब ये कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाएगी तो ये कंज्यूम हो जाएगी, और ये कंज्यूम जब हो जाएंगी तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, यू हैव टू गिव समथिंग इन एक्सचेंज. So these are four most important parts around which whole economy revolve. So till now we have defined economics, what it is. I hope all of you have understood it. और इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगा कि डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, और ये जो डेफिनेशंस हैं कभी वहाँ से आपको पूछा जा सकता है, दिस डेफिनेशन वहाँ से लिखी होगी तो ये डेफिनेशन किसने दी है, या आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि वैलिड डेफिनेशन जो है ये किसने दी थी,
ये भी पूछा जा सकता है कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी, और समटाइम्स दे मे आस्क क्रेस्टी डेफिनेशन जो वाज द ऑथर ऑफ दिस वेरी डेफिनेशन. So for now you should understood what economics is all about. तो इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांच हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. The economics who coined the term micro and macro, ठीक है, it was Ragnar एंटन किटिल फ्रिच, FRISCH. ये नॉर्वे का एक इकोनॉमिस्ट था. उसने 19 यू शुड आल्सो नो दैट ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1969, क्योंकि बहुत देर तक ये सस्पेंड इन्होंने किया था, लेट स्टार्ट किया एक्चुअली. So the economist who coined the term micro and macro was Ragnar Fritsch. In 1933, he used this term first time in the history of economics. They have the word micro and macro again. The word micro and macro, मैंने आपको पहले ही बताया. द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु यूज दिस टर्म वाज रैगनार फ्रिच इन 1933. ही वाज आल्सो अ फर्स्ट नोबेल laureate इन 1969, गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. इसका कंट्रीब्यूशन क्या है और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट शुड नो. इकोनॉमेट्रिक्स में सबसे ज़्यादा काम जो किया है यही नॉर्वे का इकोनॉमिस्ट था, रैगनार फ्रिच. उसने सबसे ज़्यादा काम किया. गॉट इट. अब माइक्रो और मैक्रो होता क्या है? The both these terms have again Greek origin. Yani micro is derived from a Greek word micros, which means small, and macro is derived from a Greek word makros, MAKROS, which means large. So word meaning से ही आप समझ गए होंगे what micro and macro is. Micro इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे, इट स्टडीज individuals rather than the whole, and macroeconomic studies whole rather than the individuals. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज हमें किसी चीज़ का प्राइस देखना है. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट. सपोज सोप हम लेते हैं, सोप की एग्जांपल. इसका प्राइस क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छा बढ़ा. अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस हमें डिटरमाइन करना है, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हमें होल इकोनॉमी में देखना है, हम आपने वर्ड सुना होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होगा? जनरल प्राइस राइज इकोनॉमी में जब होती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं. जब हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इट इज़ अ कंसेप्ट रिलेटेड टू स्टडीड बाय या विच कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन अगर हम एक चीज़ का प्राइस देखना है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा. इंडिविजुअल डिमांड अगर हम देखेंगे किसी चीज़ की बढ़ी है या घटी है, इट इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर अगर हम देखेंगे होल जो भी मार्केट में हमारे पास जो चीज़ें हैं, इनका प्राइस अगर हमें देखना है, या हाउस होल्ड्स इकॉनमी में अगर हाउस होल्ड वर्कर्स की हमें बात करेंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा. जो एक्शंस या जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर हम ब्रॉड में देखेंगे, सपोज ग्रोथ है. ग्रोथ इज़ ए कंसेप्ट
विच कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लॉन्ग सस्टेनेबल चेंज जब हम देखेंगे, लॉन्ग सस्टेनेबल चेंज इकोनॉमी में कितनी है, यानी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं रादर देन एन इंडिविजुअल। या अनएम्प्लॉयमेंट जब हम कहेंगे दैट मीन्स वी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द होल कंट्री। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, 5% है। मैंने पहले भी बताया आपको ट्रेड बैलेंस कंट्री की, ये एक पर्टिकुलर ट्रेड बैलेंस जब हम स्टडी करते हैं वी डू नॉट गो फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, नो, हम ट्रेड बैलेंस पूरा जो भी हमारा ट्रेड है जितने भी चीज़ों का है विद हाउ मनी कंट्रीज वी हैव, जब हम उसको बैलेंस करते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स कितने हुए, एक्सपोर्ट्स कितने हुए, तो ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो थोड़ा और समझाने के लिए मैंने थोड़ा कंपैरिजन के लिए आपको ये चार्ट दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, एक इनकम इंसान एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या घटी है, इट इज स्टडीड अंडर द इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम नेशनल इनकम यानी होल कंट्री की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं, इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड या सप्लाई ऑफ लेबर हमें देखनी है, वो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट कंट्री में देखनी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हाउस होल्ड फर्म्स का डिसीजन यानी हाउस होल्ड्स या फर्म्स का डिसीजन देखेंगे, हम एक फर्म का देख रहे हैं, हाउस होल्ड्स का देख रहे हैं, इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हम जब एग्रीगेट डिसीजन देखेंगे इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट जो फैसले लेते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सो आई होप माइक्रो और मैक्रो दोनों आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सिंपल है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे कोई चीज़ स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल इनकम हो, इंडिविजुअल प्राइस हो, इंडिविजुअल सप्लाई हो, अगर हम ब्रॉड में, अगर हम एग्रीगेट में किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट सपोज डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की हम बात करेंगे, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ट्रेड बैलेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये लॉन्ग्स, ये चीज़ें जो है ये हम स्टडी करते हैं होल रादर देन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सो इट विल कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज हमने दो चार चीज़ें स्टडी की। थोड़ा सा हमने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द सेकंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी हैव गॉन थ्रू 3-4 डेफिनेशंस। फिर हमने कंक्लूजन में देखा व्हाट इकोनॉमिक्स इज। फिर इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांच हैं, देयर आर मैनी एक्चुअली, बट दो मेन है विच इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस, दैट्स माइक्रो एंड मैक्रो। वो भी हमने स्टडी किया कि कोई द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो। लेटर ऑन हमने डेफिनेशंस देखी इन दोनों चीज दोनों की डेफिनेशंस। प्लीज़ आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा, या आपकी जो क्वेरीज होगी आई विल लव टू एक्सेप्ट देम। और मैं कोशिश करूँगा जो आपकी क्वेरीज हैं उनको, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा। सो I will say goodbye for now. Assalamu alaikum.